Good morning, students. Live class for 10th Science, chapter Electricity. This is the second class for this chapter. In last class, I gave you some assignments. जो आप में से कुछ लोगों ने ही मुझे सेंड किए, बाकी लोगों ने नहीं किया. आज वो सेंड करेंगे असाइनमेंट. जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे वो एक बार आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 था, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला R is equal to rho L by A. Okay, you know that R is resistance, rho, this is rho, RHO, rho. Rho is resistivity, L is length, and A is area. Based on this formula, I gave you two numericals. Okay, first was very simple. You had to find out value of resistivity when values of R, L, and A was given. Okay, that was very simple. You just had to put values. So value of R, L was 1 meter. So first we have to find out value of rho. So we have to find the formula. Rho will be R A by L. Do not get confused in this formula. This is formula for R and this is for rho, resistivity. Resistivity is constant. It depends on nature and temperature. So this is rho, which is R A by L. So value of R was given about 10, 20 or 30 ohm. Area of cross section of wire. This is wire. इसका cross section एक circle होगा. उस circle का area pi r square. So you were given diameter. So in terms of diameter क्या होगा? You can find R from D. D was 0.03 centimeter. So what will be R? Very easy. R will be half of this 0.015 centimeter, right? And you have to convert it into SI units, meters. So it will be 0.015 into 10 raised to power minus 2. And what is 10 raised to power minus 2? Some of you don't know. 10 raised to power, अगर कोई पावर नेगेटिव में होती है इसका मतलब होता है कि वो रेसिप्रोकल है. 10 raised to power minus 1 means 1 by 10. 10 raised to power minus 2, it means 1 by 10 square. Okay, so when you convert centimeter into meter, you multiply by, so you divide by 100, it means you multiply by 10 raised to power minus 2. So value of R will be 0.015 into 10 raised to power minus 2 meters. Okay, this is not the standard form. When you write the standard form, 0.015 10 raised to power minus 2 centimeter. This is not the standard form. When you write in standard form, there is only one decimal place. For example, 1.5 into. This is the standard form. Okay. And now, how do you change power? See, how many places did you move? Decimal. 1, 2. पहले पॉइंट इधर था, 1 के बाद 2 places decimal. आपने इस नंबर को इंक्रीज किया, तो इस नंबर को आप इंक्रीज करेंगे 1.5 into 10 raised to power minus 4 meters. Okay. So this is the standard form. That's how you will convert centimeter into meters. So value of R is 1.5 into 10 raised to power minus 4. Square होता है pi r square divided by L. L was 1 meter. Okay, pi की value is 22/7 or 3.14. You simply have to multiply and find out the answer. That is very easy calculation. Unit of resistivity. What is rho? Rho is resistivity. Tell me the unit of resistance. Write down in comment box unit of resistance. Unit of resistance is ohm, OHM, ohm. And unit of resistivity is ohm meter.
unit of resistivity, ohm meter. This is the unit of resistivity. So जो आंसर आएगा आपका उससे आप ओम मीटर में लिखो, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मीटर रेजिस्टिविटी। मीटर कहां से आया? सी। इफ यू पुट यूनिट्स इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप यूनिट्स पुट करो। आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट मीटर, सो रो की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ओके, दैट इज हाउ यू फाइंड आउट यूनिट ऑफ resistivity. So first numerical is solved. The second numerical was a bit different. Resistance was given 2 meter. Resistance was ohm. Unit of resistance is ohm, not meter. Resistance was given 2 ohm. Question was, first part was, if length is doubled, what will be the new resistance? लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? सो व्हिच फार्मूला यू हैव टू यूज? इस फार्मूले में रेजिस्टेंस और लेंथ आते हैं, इसी सेम फार्मूले में R इज इक्वल टू रो L बाय A। एवरीथिंग इज कांस्टेंट, बस आपको L जो है डबल कर दिया है, तो R क्या होगा? यू नो, यू कैन टेल दिस डायरेक्टली कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो इफ L इज डबल, R इज डबल। लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम, ठीक है। सेकंड पार्ट था, उसमें पूछा था एरिया इज डबल। सो यू कैन सी, अगर एरिया को डबल कर देते हैं, सो द होल फार्मूला बिकम्स हाफ। यू कैन सी दिस बिकम्स 1/2। सो रेजिस्टेंस विल बी हाफ। सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस केस में? 2 ओम। थर्ड केस जो था उसमें था द वायर इज स्ट्रेच्ड to itself, वायर को खींचकर लंबा किया गया, वायर इज stretched to itself। in that case length is doubled but area is reduced, क्योंकि किसी भी चीज को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। सो इन दैट केस यू कैन सी, अगर हम लेंथ को डबल कर दें और एरिया को हाफ कर दें, तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा 2 न्यूमरेटर में जाएगा, so it will be 4 rho L by A। In that case, new resistance will be 4 times of R, which is 2 ohm. So new resistance will be 8 ohm. Okay. So how you have to write this? See, first you have to write this formula. Part 1. Question number 2, part 1. This is the formula. Okay. It is given 2 ohm. Now you have to find new resistance. New resistance you denote by R dash. Okay, R dash। R के ऊपर डैश लगा दो, it is दूसरा रेजिस्टेंस। इस केस में हमने क्या किया है? लेंथ को डबल किया। इतना हो गया, ठीक है। 2 को आप आगे ले आओ, कांस्टेंट है 2 rho L by A, and you know the value of rho L by A, which is 2। So 2 into 2 equal to 4 ohm. That's how you have to solve. This is part 1. Part 2, you should solve yourself. R dash. In this case, area is doubled. So L by 2A. Constant को आगे ले आओ. What is constant? Not 2. This is 1/2. तो 1/2 को आगे लेकर आएंगे, 1/2 rho L by A। Rho L by A is 2, so it will be 1 ohm। Okay, any doubt you can ask? First and second part. Now we move on to third part. Wire is doubled on itself या फिर wire is stretched। इसका मतलब है लेंथ डबल, एरिया हाफ। R dash new resistance, rho length is doubled and area is reduced। It means 4 rho L by A, which gives us 4 into 2, 8 ohm. This was the third part of the question.
Okay, वायर इज स्ट्रेच्ड इट मींस इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया है, लेंथ बढ़ गई. इफ एनी डाउट प्लीज आस्क. Based on this formula, there are many numericals given in your NCERT book. You have to solve all of those numericals. This is your assignment for today. Page number 208 पर NCERT में numericals दिए हुए हैं. 4 numericals you have to solve them. In last class, we studied Ohm's law. What is Ohm's law? Please write anyone. What is Ohm's law? If anyone knows, please write. Define Ohm's law. Not mathematical expression, define. That the current flowing through a conductor is directly proportional to voltage across its ends या फिर potential difference across its ends. वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा. दिस इज Ohm's law. I is directly proportional to V. I is current, V is potential difference. Okay, so you can write it V directly proportional to I, so V is equal to I. This is the basic Ohm's law. How do you prove this law? इस law को आप कैसे experimentally prove करते हो? You first make a circuit, और उस circuit में आप क्या क्या चीजें use करते हो? See, how do you make a circuit? You draw a circuit in which there is a battery. This is battery, everyone knows. Okay. You have to measure two things, current and voltage. Which device is used to measure current? Write down. Which device is used to measure current? Which device is used to measure potential difference? Anyone? Faizan Nasir is right, Ohm's law is right, but which device is used to measure current? Ammeter, and voltage के लिए voltmeter. Okay, always remember one thing, ammeter आप जब भी कनेक्ट करोगे तो वो वायर में सीरीज में कनेक्ट करोगे. सीरीज का मतलब होता है दिस इज बैटरी, ओके, और इसी के सीरीज में एमीटर. वोल्टमीटर जब भी आप कनेक्ट करोगे तो वो पैरेलल में कनेक्ट करोगे. कैसे होता है यू विल स्टडी लेटर. For now you can see this is resistance. Okay, any resistance, any device, any conductor, कोई बल्ब हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, that is resistance. You connect. This is the basic circuit. एक की लगा दी हमने, key is open, अभी open है, ठीक है. To measure potential difference you use voltmeter, and voltmeter is always connected like this. What is this? This is called parallel. पैरेलल क्या होता है? ये पैरेलल होता है मतलब एक ऊपर एक नीचे रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर. और एमीटर जब आप कनेक्ट करोगे so एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर. सीरीज मतलब एक ही सीधाई में, एक ही स्ट्रेट लाइन. तो रेजिस्टेंस यहां पर है तो एमीटर आप यहां सीरीज में कनेक्ट करोगे. ऐसा क्यों होता है यू विल स्टडी लेटर. फॉर नाउ यू रिमेंबर दिस, एमीटर इज सीरीज एंड वोल्टमीटर इज पैरेलल. In this battery, which terminal is positive? जो long terminal है that is positive, negative. ठीक है. पैरेलल में जो है पोलैरिटी सेम रहती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव है वोल्टमीटर में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव. सीरीज में देखिए, सीरीज में वोल्टेज जो पोलैरिटी होती है that is similar. If this is negative then this is also negative. ठीक है. जो सीरीज में पोलैरिटी चल रही है वही पोलैरिटी होगी. दिस इज नेगेटिव होगा तो ये टर्मिनल भी नेगेटिव. ठीक है, और दैट इज पॉजिटिव. ओके, सो बाय दिस सर्किट यू कैन प्रूव ओम्स लॉ. हाउ? देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज नोन एज रियोस्टेट.
यू नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको पता है, एक होता है रियोस्टेट। वो रियोस्टेट में क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस को ही थोड़ा सा, ये जो वायर इधर आ रही है हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट्स हाउ यू ड्रॉ ए रियोस्टेट एरो के साथ, ठीक है। रियोस्टेट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया और रियोस्टेट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं या फिर रेजिस्टेंस को काट कर ऐसे, दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट का फंक्शन होता है रेजिस्टेंस को चेंज करना, और रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा, ठीक है, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। So by rheostat we change the resistance, and that's how current changes. So what we do? We make a table. In one column we write current, in one column we write V. Okay. Value of current we note by ammeter. Ammeter से हम value of current को note करेंगे, और वोल्ट मीटर से हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज नोट करेंगे, ठीक है। करंट की वैल्यू आपको एमीटर में दिखाई देगी, दिस इज अ डिवाइस, इसमें वैल्यू दिखाई देती है, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, 0.02 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आपने रियोस्टेट को और इधर किया, उससे क्या हुआ, करंट की वैल्यू चेंज हुई, फिर हो गया 0.04, उसके बाद हो गया 0.06, 0.08। That's how value of current is changing by changing the rheostat position. Rheostat पहले इधर था, फिर आपने इसको और साइड में किया तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, ऐसे वैल्यू इंक्रीज हो गई। What do you observe? You observe that as the value of current increases, value of voltage also increases, and that is Ohm's law. I is directly proportional to V और V is directly proportional to I. तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज इज आल्सो इंक्रीजिंग। आप साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू जो है वो नोट करते जाएंगे, एंड यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, and you find out that that is a straight line, hence prove Ohm's law. That's how you prove Ohm's law. You can do this in lab, that you draw this circuit, note the value of current and voltage. You see the graph between I and V is a straight line. It means as V increases, I also increases. As I increases, V also increases. So that is how you prove Ohm's law. Okay, you can revise this from NCERT book. You can draw this circuit, and if you want, if any doubt, you can write. This is voltmeter. V measures voltage. This is A, ampere. Ammeter. Ammeter measures current. Ammeter in series, voltmeter in parallel. We change the value of resistance by rheostat. 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 We change the value of resistance. Current in this ammeter changes, and similarly voltage also changes. Voltage directly proportional to current. That is Ohm's law. There are various factors on which resistance of a conductor depends. You know about those factors, we studied in last class. कौन से factors हैं लिखो? What are the factors on which resistance of a conductor depends? Length, area, temperature, nature. Last class में बहुत अच्छे से हुआ था ये, ठीक है। लेंथ एरिया कैसे डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला पता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और नेचर पे। नेचर का मतलब होता है मटेरियल, कॉपर का वायर है, रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का है तो अलग होगा। बट हाउ डज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर? रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? सी,
Conductors are generally made of two kinds of elements, metal या non metal. ठीक है, if conductor is made up of metal, अगर कंडक्टर मेटल का बना हो या फिर यू कैन से इन केस ऑफ मेटल्स resistance is directly proportional to temperature. Means अगर टेम्परेचर आप किसी भी कॉपर वायर का, एल्यूमिनियम वायर का, किसी भी मेटल का इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स है कोई, उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मींस टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा. नाउ यू टेल मी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस केस में करंट ज्यादा फ्लो करता है? ठीक है, अगर मैं मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो उस केस में करंट कम फ्लो करेगा या फिर ज्यादा. और नॉन मेटल के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? You will say that this is resistance, not current. How can you say about current? But you know resistance is nothing but opposite of current. Resistance is preventing current to flow. Resistance current को रोक रहा है, that is resistance. So resistance अगर कम है तो current ज्यादा flow करेगा. ठीक है? So in case of metals, as temperature increases, current also decreases. Temperature increases, resistance increases, current decreases. Temperature increases, resistance decreases, current increases. That is very simple. Okay, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेटल के केस में क्या होता है, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो मेटल है जैसे कि सोडियम है, ठीक है, या फिर कॉपर ले लीजिए, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, positive, copper is too positive. It means that in metal there are cations. आपने 9th क्लास में पढ़ा था cations. तो copper too positive is a cation. In metals, current flows due to cations, movement of cations. Okay. See, Cu2 positive का मतलब है copper पर 2 positive charge है. It has given out 2 electrons. ठीक है, so as temperature increases, movement of cation increases. और उससे क्या होगा, cations की मूवमेंट इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डिक्रीज होगा. as temperature increases in metals, the movement of cations increases. That's why it obstructs the flow of electrons and resistance increases. But in non-metals there are no cations. Non-metals में cations नहीं होते. There are only electrons and negative ions. So temperature increase करने से movement of electrons increases and resistance decreases. All right, that is a little advanced from your syllabus, but you should know. Okay, this is not given in your NCERT book, but you should know about this. How does temperature depends on resistance depends on temperature. Okay. If any doubt, please ask. No doubt. So we shall move to very important part, which is combination of resistors. What are resistors? Resistors are nothing but resistances. ये रेजिस्टेंस है, इसी को हम रेजिस्टर बोलते हैं. रेजिस्टर कोई भी डिवाइस हो जाएगा. ठीक है, so combination of resistors, it means when you combine different resistors or different devices, what is the total or equivalent resistance or value of current. देखिए, in your house या फिर किसी भी बिल्डिंग में बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, फैन, बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट, कुछ भी. ठीक है, so those all are nothing but resistors. Those are devices. Okay, so that's why we have to study if these devices are combined. जैसे कि इस रूम में बहुत से बल्ब हैं, लाइट है. ठीक है, so वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं.
सो इसका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें पढ़ना है. So how can you combine different resistors? There are two methods. First is series, second is parallel. By these two methods you can combine resistors. Series में कैसे combine करोगे? This is one resistor and in series this is two resistor. In series three resistors. That's how you draw in series. In parallel this is one resistor, उसके नीचे पैरेलल में दूसरा तीसरा, and these all are connected to a battery. This is a parallel combination and that is a series combination. You all connecting battery. Okay, you understand what is the difference between series and parallel combination. Now you have to study that what will be the equivalent resistance. For example, this is 2 ohm resistance, this is 4 ohm and this is 6 ohm. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें से कितना फ्लो करेगा और 6 ओम वाले में से कितना फ्लो करेगा. अनदर क्वेश्चन, 2 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी है, 4 ओम रेजिस्टेंस की वोल्टेज कितनी है, 6 ओम. देयर आर वेरियस क्वेश्चंस which you will get answer by studying this concept, combination of series. So first we start with combination of resistors in series. Combination of resistors in series. Okay, so combine resistors, two resistors. Let's take just two resistors in series. Okay, here is a key. Alright. How does current flow in this circuit? Positive to negative. This is positive terminal, that is negative terminal. Current always flows from positive to negative. As you can see, current direction will be this. Now you tell me, value of current in these two resistors is same or different? इन दोनों डिवाइसेस में करंट सेम फ्लो कर रहा है या फिर अलग अलग, फिगर से इजीली पता चल रहा है. यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. एज यू कैन सी, जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है वही करंट इसी में फ्लो कर रहा है. सो वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ऑलवेज रिमेंबर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन I current is same, but there is another parameter, voltage. voltage भी जो होती है that is not same, क्योंकि सीरीज में इस डिवाइस में जो वोल्टेज है और इस डिवाइस में जो वोल्टेज है वो अलग अलग होंगी. ठीक है, अगर ये 220 पर है तो जरूरी नहीं ये 220 पर हो, ये 160 पर भी हो सकता है. ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट. वोल्टेज वी डिनोट बाय V, voltage different, DIFF, different. Note down this will always work in your problems. I current same, V voltage different in series. Okay, so current is same in these two resistors, voltage is different. If this circuit is drawn in parallel, अगर आप पैरेलल में ड्रॉ करते हो, पैरेलल में देखिए, पैरेलल, हाउ डू यू ड्रॉ पैरेलल सर्किट? टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल लाइक दिस, बोथ कनेक्टेड टू बैटरी. नाउ करंट फ्लो करा पॉजिटिव टू नेगेटिव हियर. ओके, you should draw this in your notebook. Positive to negative here. Now you can see at this point, इस point पर current divides into two paths. First is here, एक रास्ता इसको यहाँ से मिल रहा है current को, दूसरा रास्ता यहाँ से. So you can see that current is divided into resistors. इसमें जो current होगा वो अलग होगा और इसमें जो होगा वो अलग होगा. So path क्या होगा? अभी current यहाँ flow कर रहा है, आधा इधर गया
आधा उधर गया, आगे जाकर दोनों फिर वापस से यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल जाते हैं। ओके, so what is the point that value of current in parallel is different. Q, you can see by diagram that current first goes here and then goes here. So current is divided. So value of current in parallel is different, unlike series combination. Okay, compare these two things, series and parallel. ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में अलग अलग होता है। वोल्टेज ऑलवेज रिमेंबर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जो वोल्टेज बैटरी की है वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की होगी, वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की होगी। ओके, सो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम, वोल्टेज सेम। दैट्स व्हाई हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, ताकि वोल्ट मीटर शोज द करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज वोल्ट मीटर में होगी, तभी ये जो है करेक्ट वोल्टेज शो करे। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज करंट इज सेम इन सीरीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए तो आपको एमीटर यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ है वही करंट इसी एमीटर में फ्लो करेगा और वैल्यू सेम है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। So you should note these 2 points. Please note down these 2 points: series combination, parallel combination, resistance, combination of resistance. Okay, so series and parallel, you have noted it down. I am going to rub this. Series current same, voltage different. Parallel current different, voltage same. You have to remember this always. So first combination is series combination. Very simple. Three resistances in series connected to a battery. Okay, I am asking you one question. This is 2 ohm resistance, this is 4 ohm, this is 6 ohm. What is the value of total resistance? Very easy, 2 plus 4 plus 6 कितना? 14 ohm. Easy, but ये आया कैसे? ऐसे कैसे हुआ? How do you find out the value of total resistance? Parallel में देखिए, parallel, these are three resistances connected in parallel with a battery. One is 2, another is 4, and another is 6. Tell me the value of total resistance in this circuit. उसमें तो आपने 2 plus 4 plus 6 कर दिया, 14 आ गया। इस केस में भी क्या होगा? प्लस होगा? नहीं, you can't add the resistors in parallel. There is another formula we will find out now. First, see series. Write down Ohm's law. What is Ohm's law? V is equal to I R. You all know very well. Okay. Write down this formula for each resistor. हर रेजिस्टर के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपने अभी पढ़ा है कि वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होती है। So we write 3 voltages, V1, V2, V3. Okay. रेजिस्टर्स की वैल्यू तो अलग है, so R1, R2, R3. But you know that the current is same in series. So current I1, I2, I3 नहीं होगा, वो सिर्फ I रहेगा, IR1, IR2, IR3. Okay.
So that's how you can write different formula for Ohm's law. Now, when you combine these three formulas, इन तीनों formulas को plus करोगे तो क्या होगा? V1 plus V2 plus V3, ओके, IR1 IR2 IR। फर्स्ट आप इसको नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। नोट कर लिया? नाउ सी, what is the total Ohm's law? Ohm's law एक्चुअली ये होता है और हर रेजिस्टेंस के लिए हमने ये लिखा है IR1 IR2 IR3। okay, this is the total voltage. Now you add them up, all three voltages you add them up, V1 plus V2 plus V3. What will be the resultant? V की वैल्यू है IR, okay, is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, because V is equal to V1 plus V2 plus V3, because in series combination voltage is different. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. V की वैल्यू IR, V1 IR1 plus IR2 plus IR, IR1 plus IR2 plus IR3. That's how you find out total resistance. I is same, so I will be cut. Total resistance will be R1 plus R2 plus R3. Okay, this is the formula to find out the total resistance of a circuit in series combination. R is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, you simply have to write Ohm's law. Okay, the total voltage is equal to IR. Voltage in first resistor IR1, second IR2, third IR3. Add them up. V is equal to V1 plus V2 plus V3. V की वैल्यू पुट कीजिए, IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. That's how you find out R is equal to R1 plus R2 plus R3. That is the resultant for series combination. Now, if I give you a question that three resistors, what is the total resistance? You simply add them. 6 plus 4 plus 2, 12. Now, if this is in parallel, draw a parallel circuit. सभी अपनी नोट में parallel resistors बनाएं. 3 resistors. The most important thing, current same है या voltage same? You know that current divide हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे I1, I2, I3. ठीक है? ये R1 रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, and this is R3. Total voltage लिखिए, very easy, V is equal to IR. Total voltage is this. ठीक है? You can find out value of I. V by R. This is the value of total current. क्योंकि in this circuit value of current is different, so हम current की value find out करेंगे. I is equal to V by R. In first resistance, what is the value of current? I1 is equal to V upon R1. Similarly, I2 is equal to V upon R. Why are we writing only V, not V1, V2, V3? Because this is parallel. Parallel voltage same है, so we have to write only V. I2 is equal to V by R2, and I3 is equal to V by R. Okay. What is the total current? Total current is I1 plus I2 plus I3.
So I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now you have to put values of I. V by R. Okay, put values of I V by R. Okay. I1 V by R1 plus I2 V by R2 plus I3 V by R3. Now V is same, V is common, so we will be cut. What is left? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That is the final formula. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the resultant resistance for combination of resistors in parallel. What you have to do, you should know that current is different or it is the same. So find out values of current. I is equal to V by R, total current. Current in each resistors. I1 is equal to V by R1, V by R2, V by R. Total current is I1 plus I2 plus I3. Put the values of each current in this formula and find out the total resistance. So that's how you find out combination of resistance in parallel. If there are three resistances, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, what will be the total resistance? Find out and write in the comments. Three resistances. One is 2 ohm, 4 ohm, and 6 ohm. 2, 4, 6. What is the total resistance? Anmol Sahu has already written. But how can we find out? 1 by R. We have to find out first 1 by R. क्योंकि फॉर्मूले में 1 by R है R. ठीक है? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Simply put the values 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6. 1 by R को ऐसे ही रखना है. What will be the LCM? You should know how to take the LCM. This will be 12. ठीक है? 6 plus 3 plus 2. That is 11 by 12. But that is not the right answer. Why? Because it is the value of 1 by R. 11 by 12 is the value of 1 by R. We have to find out value of R. So if 1 by R is 11 by 12, then R is 12 by 11. This is the combination of resistances in parallel. Total resistance is 12 by 11. Okay. So correct answer is 12 by 11. Because you have to take reciprocal of 1 by R to find R. इसका भी reciprocal हो गया 12 by 11. You can see it will be about 1.0 something. Okay. It is similar to 1 ohm. Now you can see very important point that in parallel combination the total value of resistance is decreased. देखिए 2 से भी कम हो गई, 4 से भी, 6 से भी कम हो गई. So in parallel combination total resistance is very less. But in series total resistances gets add up. So value of resistance is high. So in parallel circuit resistance कम होता है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी. That's why domestic जो सर्किट होते हैं, घरों में जो सर्किट होते हैं, वो पैरेलल सर्किट में होते हैं, so that value of resistance is less and current flows more. Okay. So if any doubt, you can write. Your assignment for today is NCERT book, page number 208. Sorry. Yes, 208. पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, that you have to solve. Okay, assignment for you. All right.